So hey guys. Hello everyone. Saryam Parvez this side. Let's start with our lecture. So this is something about me. I'm a 99.7 percentiler in CAT. I cleared various competitive exams like GATE, CAT, RR, VPO, all clerk exam, IBPS, PO. So this is about me. So today I'm discussing RBI Assistant Prelims questions, Prelims exam, all 35 by 35 questions we will cover in this section. Now let's straight away move to the questions. Okay, now question 1. So हम क्या करेंगे, बेसिकली रैंडमली जाना वन बाय वन क्वेश्चन आई वुड नॉट रिकमेंड. सो सबसे पहले एक एग्जाम स्ट्रेटेजी देखेंगे हम, हाउ टू अप्रोच क्वेश्चंस इन रियल एग्जाम. ओके, तो स्ट्रेटेजी के हिसाब से ही हम क्वेश्चंस करेंगे. तो मेरे अकॉर्डिंग इट्स बेटर कि सबसे पहले लेट्स डू विद simplifications. Okay, so where are they? I think question number 16. Yeah, from where simplification started. So it's better to cover these questions as these are in bulk questions and these are easy numbers. Short they will give us marks. So first question is 45% of 720. 45 by 100 of 720, it is nothing but 5 9 the 5 2 the 36 times 9 6 the 54. This is 324 minus 42% of 400 is nothing but 168 equal to question mark upon 2. So what will be the value of question mark? Question mark value is now how to do this? It's basically a simple way. 300 minus 100 is nothing but 200 plus 20 minus 60 is nothing but minus 40. 4 minus 8 is nothing but minus 4, so it will come out to be 160. 160 minus 4, 156. So value of question mark is 156 into 2. It will become 6 to the 12, 5 to the 10, 11, 2 1 to 3, 312. So answer will be 312. Sorry, I forget to mention the options. Let me write down the options first. Just a minute. Options are yes. So options are number A 287, 312, 345, 290. Option is 109. So what will be the answer? Answer will be 312. Move to the next question. Question 17. Okay. Options for question 17. 188. Okay. So how to solve this? 15 into what is 2 ka square? 2 ka square is 4 upon 5. Cancelling out 5 to 3 times. 4 3s are 12 plus
Question mark equal to 25%. What is 25%? 1 by 4 of 800 or 200 times. So what will be the answer? Answer will be 200 minus 12, which is nothing but 188. So what will be the answer? 188 will be the answer. Just a minute. Answer. Now let's move to the next question. 18. Let me change the pen color. Let's take some bright color. Let's take green. Is that visible green? Let's take yellow color. Okay. So here the options are no. Let me take some bright color for that. Yeah, perfect. So here the options are minus 65, minus 61, minus 73, 45. Okay. So how to solve this? 8 square. 8 square is nothing but 16. 4. 64. 15% of 220. 15% of 220 is nothing but 3 by 20 of 220. Let's solve straight away. 2 to 11 times. So this will entire will become 33 minus 19 to the 38 equal to question mark plus 120. Okay, so 64, 32, 33 minus 32 is nothing but 1. 65 equal to question mark plus 120. So question mark will become 65 minus 120. Okay, this is nothing but equal to 65 minus 120. 60 minus 120 is minus 60 plus 5. So it will become minus 55. I think there are some mistake in options. So let's mark it as 55 here. Okay, so what will be the answer? Minus 55 will be the answer. Let me recheck once. 3 by 20, 5, 3, 20, 2K, 2, 11, 33, and 19 to oh, okay. Here I committed a mistake, sorry. Here it is 19 to the 38. Okay, my mistake. 33, this is minus 38, so it will become 33 minus 38, which is nothing but minus ka 5 plus 64. So 64 minus 5, it will become 59 equal to this plus 120. Now no need to solve further, since if there is a 10 digit and there is a 9 digit, obviously it will come 1. So it will 59 minus 120. Again, now we got our answer as minus 61. Let's move to the next question. 19. Options are 9, 5, 3, 4, 8. So how to solve this? It is 256 की power 1 by 2. 256 की power 1 by 2 is nothing but 16 plus 1331 की power 1 by 3 is nothing but 11 minus 21 into 2 is nothing but 42 equal to question mark square minus 31. On solving this will become 27. 27 minus 42, which is nothing but minus 15 equal to power minus 31. This square is nothing but on taking 31 here, it will become positive. 31 minus 15 is nothing but 16. Taking square root, and don't forget to add plus minus sign. So value of question mark will become
plus 4 as well as minus 4. So these are the two answers. Since in our options there only 4 is given, so 4 will be our answer. Okay, let's move to the next question. 20. Okay, what are the options? Options are okay. So something cube minus 212 equal to 182 minus 178. Okay, this is simple question. Plainly solve it. 212 को इधर ले जाएंगे, 212 प्लस का 182 माइनस का 178. 182 178 is nothing but plus का 4, so something cube is nothing but 216. So what will be the value of its 1 by 3? Taking cube root both sides, so it will become 6. So what will be the answer? 6 will be the answer. Now let's move to the next question. 21. Options are 9, 3, 2, 1, 5. Okay. 4 by 5 plus 8 by 10 minus 3 by 5 question mark by 5. Okay, perfect. Since LCM are common here, first of all solve this. 4 minus 3, which is nothing but 1 by 5 plus 8 by 10. Now 2 4s are 2 5, cancelling it out in the simplest terms. No, it will become 1 by 5 plus 4 by 5 is nothing but 5 by 5. 5 by 5 is nothing but 1. So 1 is question mark by 5. So what will be the value of question mark? Question mark is nothing but 5. So 5 will be our answer. Okay. Question 22 options are 167, 197, 174, 215, 198. Okay. 64 into 3 by 4. Solving it, 16 is a 48 minus 12% of 600, which is nothing but 12 into 6. Cancelling, suppose on place of percentage, this 100 come, cancelling this by this. So it will become 12 into 6. 12 into 6 is nothing but 72 plus question mark equal to 150. Okay, so 48 minus 72. 48 minus 72 is nothing but minus uh, 30 and plus 6, which is nothing but minus 24. So it will become minus 24 equal to 150. What will the value of question mark? Value of question mark 150 plus 24 is nothing but 174. Let's move to the next question. 93. Okay. Options are 455, 482, 560, 512, and 635. This is 4. Okay. 43 into 4. 4 3s are 12, 4 are 16, 17. 172 plus 38 into 5 is nothing but 190 equal to this minus 120. Or we can take common as 2 also. So it will become 2, 976, 1, 2, 2, 3, 362 plus 120 equal to question mark. What will be the value of question mark? 2, 6, 7, 8, 3, 4. Answer will be 482. Okay. Now let's move to the next question. 24. Okay. Options are 89, 97, 89, B, 97, C, 102, 115, E, 76. Okay. 100 की power 1 by 2 is nothing but 10 minus 14
into something, 7 cancelling it by 2 times, 3 2s are 6 minus 6 plus 190 equal to 2 into question mark. So on solving this, this will become 200. 200 minus 6 is nothing but 194 equal to 2 into question mark. Question mark की value कितनी हो जाएगी? 194 divided by 2. 2 9 18, 97. What will be our answer? 97 will be our answer. Perfect. Let's move to the next. 25. Okay. Options are 90, 21. 30. Okay. So 30% of 800 is nothing but this upon this, removing the percentage sign and just multiply, cancelling this out, it will become 240 minus similarly 15% of 900, cancelling this percentage with this 100, it will become 9 5 is 45, 135. Okay, it will question mark into 5 minus 10. Okay, so this will become 100, 40 minus 35 plus 5, so it will become 105 equal to this into 5 minus 10, taking here 115 equal to this into 5. What will be the value of question mark? Question mark is 115 divided by 5 is nothing but 23. So what will be our answer? 23 will be our answer. Move to the next question. 27. Options are 145014. Sorry, it is question 26. Okay, so options are 17, 9, 8, 20, 11. Under root 81. Under root 81 is nothing but 9. 9 into 3 is nothing but 27 minus 12 into 11. 12 into 11 is nothing but 120 plus 12 is nothing but 132 minus 132 plus question mark ka square equal to 4 ka square is nothing but 16. Okay, so on this will become minus ka 105 plus this square equal to 16. So this will become 16 plus 105. 11 1, so it will become 121. Again question mark square value is 121. What will the value of question mark? Under root plus minus 121. It is nothing but plus minus 11. Since value will be plus 11 as well as minus 11, once in our question only 11 is given, so we mark it as 11. Okay, question 27. Options are 1450, 1130, 1880, 1260, 1740. How to solve this? 10 into 3 by 5 into 250. Simply cancelling out by 50 times. This is 150. 150 into 10 is nothing but 1500 minus 190 equal to this plus 180. Taking this here, what will be the value of question mark? 115 minus 190 minus 180 is, these are nothing but 370. So what will the value? 1500 minus 370. 1500 minus 300 is nothing but 1200. 1200 minus 70, it will become 1130 as our answer. Perfect. Let's move to the next question. Okay, so our simplification series are over. So what we will do now, we will further look over what are the questions available. These are arithmetic. We will do it later on. 25, this is also arithmetic. Okay, number series 80, 40, question mark 60, 120, 300. Okay, minus 40 plus 60 plus 180
Any pattern? No pattern. Okay, now let's try something unique. Into 0.5. Okay, this is nothing but 2. This is nothing but, I think, 2.5. Perfect. So this will be into 1. So and this will be 1.5. So what will be the value of question mark? Question mark value is 40 into 1, which is nothing but 40. If we multiply 40 by 1.5, then it will become 60. Perfect. And 60 by 2, 120. Perfect. So what will be the answer? Answer will be 40. I forget options again. What is the question number 6? So options are 25, 40, 30, 20, E 55. What will be the answer? 40 will be our answer. Perfect. Move to the next question. Question 6. Okay. Options 7th. 141, 134, 150, 129, 161. Series is 125, question mark 186, 235, 299, 380. Okay. Take the difference, 200, 100, 30 minus 80 minus ka 50, 5 minus 6 minus ka 1. This is nothing but 150, 49. What is this? This is nothing but 200 minus 100, 4. 9 minus 3 is 64. The difference is 64. Here, difference is 1 and 80, 81. Okay, perfect. So what will be the difference? This is nothing but 7 square. This is nothing but 8 square. This is nothing but 9 square. So what will be the difference here? This is nothing but 7, 8, 9. This is nothing but 6 square. What will be the difference? This is nothing here but 5 square. Okay. So what will be the value? 125 minus 5 square, which is nothing but 125 minus 25. It will become 100. What will be the value here? Value here will be 100. Sorry, we had to add. Sorry, my mistake. Since they are adding up, okay. 5 square plus 25 is nothing but 150. So what we are getting here? Here is 150. Let's cross check. Difference 25. Here difference 36. Perfect. 6 square. Okay. So what will be our answer? 150 will be our answer. These are the options. Sorry. B. This is C. This is D. This is B. Question 8. Options are 60, 90, 180, 20, E, 120. No. 15, 30. This 360, 1800, 10800. Since we can see here the difference is not that much high, but here the differences are too high. So these are not simple plus minus series. Okay, so let's go directly on the multiplication. 360 multiply by 5, we get 1800. 1800 multiplied by 6, we get 1080. Perfect. And 15 multiplied by 2. Okay, so what will be the series? Into 3 and this into 4. Okay, so 30 into 3. 30 into 3 will become 90. So what will be the value of question mark? Value of question mark will be 90. Let's cross check. 90 into 4. 90 into 4 is nothing but 360. We are getting 360. Perfect. So what will be our answer? 90 will be our answer. Okay, so now all number series are over. Now let's straight away come to the DI portion. Okay, just a minute. Okay, so this is the DI, simple DI. I think we let's look over the question.
What is the question showing? The given bar graph shows the total number of cakes, cups plus lemon sold. Okay. There are two flavor of cakes, lemon and another one is cup, sold on two different days, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday respectively, or also the number of cupcakes sold. Okay. Which is this gray one. Let me take down the pen. So this gray one is the total number of cakes, and this black one is the what is the black one? Cupcakes. Okay, perfect. And how to find out the lemon one? टोटल में से कपकेक माइनस कर देंगे, ठीक है. Let me write down. Data Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday and Friday. Total. This will become cupcake and this will become lemon. Okay, perfect. For Monday it is 84. Okay, for Tuesday it is, this is 1, 2, 3, 4, 5, 5 and the difference is of 35. So 35 divided by 5 is nothing but 7, 7, 7 का difference है. So that will become 49, 1, 2, 3, 49 plus 21, 49 plus 21 is nothing but 70. This is 70 and this is 77 and this is 91. This is what it this will be 7, 98, 98 plus 7, 105. Okay, what will be this? Say 14. See, this is 63 and what will be this? This is 49. This is 721. This is 49 plus 7. 49 plus 7 is nothing but 60, sorry, 56. This 56, what will be this? 1, 2, 3, 4, or 87 minus 7, this is nothing but 77. Perfect. So these are all the values we get. This is 84, this is 7, this is 77, this is 91, this is 105, and this is for Friday, Monday, Tuesday, Wednesday. Okay, for Tuesday it is 70. Or let me correct it. Okay. For Wednesday it is 77. For Thursday it is 91. For Friday it is 105. And what will be the cupcakes? Cupcakes are 77 on Friday, 56 on this day, 21 here, 49 here, 63 here. On subtracting it, it will become 21. On subtracting it will become as 21. On subtracting it will become as 6, 56. On subtracting it will become 40 minus 5, 35. On again subtracting it will become 30 minus 2. 30 minus 2 is 28. So these are all the values we get. Now let's straight away move to the questions. Question 9. The total number of cakes sold on Saturday. Saturday is 23 more than right on Wednesday. What will be the total number of cakes sold on Wednesday? I think Wednesday total number of cakes sold are 77. Okay, and the number of cakes sold on Saturday is 23 more. So 77 plus 23 is nothing but 100. So 100 number total number of cakes are sold, and the number of cakes on sold on Saturday is 45. Okay, Saturday also cupcake as well as lemon cake. Okay, cupcakes sold are 45. It is 45. So what will be the number of lemons? So 100 minus 45 is nothing but 55 number of lemon cake.
Again, I forget options. Let me write down. A 55, B 65, C 87, D 45, and E 34. So what will be the value? 55 will be the number of cupcakes sold on Saturday. Let's move to the next. Question 10. Options are 85, 90, 80. Okay. On Friday, the number of chocolate cakes sold is double that of lemon cake sold Friday. Okay. लेमन केक सोल्ड कितने हैं? फ्राइडे में लेमन केक सोल्ड कितने हैं? 28. Chocolate cakes are double of this. Chocolate cake will be 28 into 2, which is nothing but 56. Okay. Find the number of chocolate cakes sold on Fridays. Simple question. 56. Answer 11. On Thursday, the total number of ice cream sold is 1 by 7 less than that of cake sold. Okay. Thursday. थर्सडे में आई थिंक 91 केक सोल्ड हुए थे टोटल. परफेक्ट. 91 केक्स. लेट मी राइट डाउन ऑप्शन फर्स्ट. 11, 98, 70. Okay. On Thursday, the number of ice creams are 1 by 7 less than. 1 by 7 less than that of cake sold. So 1 by 7 less than is nothing but 6 by 7. And what is the number of cakes sold is 91. 7 13 times, it will become 78. Find the total number of ice cream sold. Total number of ice cream sold is 78. Easy questions. Find the ratio of the number of cupcakes sold on Tuesday. Okay, let me write down options first. And 12, 7, it's to 3. Okay. Find the ratio of the total number of cupcakes sold on Tuesday. Tuesday, cupcake upon number of lemon cake on Monday. Monday, lemon cake. Let's move to the table directly, straight away. Okay. Tuesday cupcake. Tuesday cupcake 49. And Monday lemon cake 21. 49 by 21. So what will be the answer? Answer will be 49 by 21. 7 so 7 times, 7 so 3 times. 7 by 3 will be the answer. 13. Find the sum of the number of lemon cakes sold on Monday, Tuesday, and Wednesday together. Lemon cake, Monday, Tuesday plus Wednesday. Just a minute. Okay. So options are 78, 84, 89. So lemon cake Monday, Tuesday, Wednesday. Move to the table. Monday, Tuesday, Wednesday. 21, 21, 56. 21, 21, 56. 21, 21, 42, 42 plus 56, 6, 7, 8. So become 98. So what will be the answer? 98 will be the answer. Find the sum of the number of lemon cakes sold on Monday, Tuesday, and Wednesday together. Question 13. Let me recheck once.
This is 56. 70, this is 21. Perfect. This is 21 also. And this is 35. Monday, Tuesday, Wednesday. 42, 42 plus 56. 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8, 9, 98. We are getting 98. Total number of cakes. This is 84. This is 7, 7, 14 less. 70. This is 1, 2, 3, 4. Okay. 49 plus 28 is nothing but 77. Perfect. 84 plus 7, 91. Okay. 1, 2, 3. 84 plus 21. Perfect. This is 77. This is 56. 1, 2, 3, 21. This is 1, 2, 3, 4, 49. Perfect. This is 49 plus 14. 1, 2, 3. This is 63. So all are perfect. So answer will be 21, 21, 42. 42 plus 56 is nothing but 98. We are getting 98 our answer. And I think there are some mistakes in the option setting. Let's mark it as 98. Okay. So 98 will be our answer. So next 14. Options are 125, 219, 180, find the difference between the sum of total number of cakes sold on Tuesday, total cake sold on Tuesday plus Wednesday. Total cake sold on Tuesday plus Wednesday and the number of lemon cakes sold on Friday. Lemon cake sold on Friday. Okay. Total cake sold on Tuesday and Wednesday. Tuesday is 70, Wednesday is 77, and lemon cake on Friday is 20. Okay. So it will become 70 plus 77 minus 28. It will become 147 minus 28. Okay. So it will become 120 minus 1, 119. 119 is our answer. Question 15. Oh, I think we left this one. Let's do this. Options are 310B, 420C, 306D, 225E, 290. Okay. 18 into 3, nothing but 54. Divided by 81 to the power of 1 by 2 or under root 81 is nothing but 9. Plus 60% of 500, cancelling percentage by 100, it will become 300 equal to question mark. This is 9, 9, 6. So question mark की value कितनी हो जाएगी 306. 306 will be our answer. Perfect. Now we are done with the speed math as well as DI series. Okay. Now let's straight away move to the arithmetic portion. Question 1. Options are 15B, 12C, 18D, 25E, 20. The present age of the father is 4 times the age of his son. Let father age be F and son's age be S. 4 times the present age of son after 5 years. After 5 years plus 5 years. What will be the age of father? F plus 5. And what will be the age of son? Age of son will be S plus 5. Okay. The father's age will be 5 times of the present age of the son. Okay. So father's age will be 5 times the present age of son. Okay. This is 5S. Perfect. F plus 5 is nothing but 5S. This is equation number 2nd. And where is equation 1? This is equation 1. F equal to 4S.
To substitute the value of f equal to 4s into this equation, so that will become 4s plus 5 equal to 5s. Subtracting this, s will become 5. What will be the value of son's present age is 5 years. And what will be the father's present age? 4s, which is nothing but 20 years. Okay. So the present age of mother is 2 years younger than father. Okay. Mother age is 2 years younger. That means mother is 2 years younger than his father. So 20 minus 20 is nothing but 18 years. Present age. So what will be the present age of mother? Mother age present age is 18 years. What will be our answer? Is 18 will be our answer. To the next question. Okay. Question option A 55, B 50, C 45, D 80, E 60. All these are percentages. Okay. A shopkeeper marks an article 60% above its cost price. Okay. This is cost price. This is mark price. 60. Let's take cost price as 100x. CP will become 160x. He allows 25% discount. On allowing discount, the selling price will become 160x and 5 4 3 by 4 4 6 40, so it will become 120x. Okay. And also uses a 750 gram weight instead of 100 kg and find the overall profit percentage. Okay. There are basically two methods to do this. Okay. So now let's come to the first method. Assume CP per kg or gram. Let's say CP per kg, or let's say CP per gram. Let's say CP per gram equal to, let's say, 100x. Okay. So since CP per gram is 100x, now what will be the MP? MP will be 60% above its cost price. That means it will be 160x. Now what will be the selling price? Selling price is nothing but 120x. Okay. So you are getting what I want to say. Okay, perfect. Now see here, this is CP and this is selling price. Okay. He is using 750 gram instead of 100 kg. Okay. सो सेलिंग प्राइस इसकी टोटल कितनी आ रही है वो हम निकाल लेते हैं सबसे पहले. ठीक है. 1 ग्राम की सीपी हमें मालूम है कितनी थी 100x. तो 750 ग्राम की सीपी कितनी हो जाएगी 750 इंटू 100x. बोलो आया समझ. ठीक है. अब बात करते हैं सेलिंग प्राइस की. तो सेलिंग प्राइस 1 ग्राम की कितनी थी 120x. समझ में आया 120x. लेकिन वो पैसे कितने के ले रहा है 750 के नहीं ले रहा है. वो कितने के ले रहा है 1 kg, that is 1000 ग्राम. ओके. नाउ टेक देयर रेशियोज. कैंसलिंग दिस आउट. 100 से 100 कैंसिल. 10 से 10 ये कैंसिल. तो ये बच गया आपका 75 और 120. और काट सकते हैं. ये कट जाएगा 5 से 15 टाइम्स. ये 5 से 24 का टाइम्स. ये जाएगा 3 से 5 टाइम्स. ये जाएगा 3 से 8 टाइम्स. 5/8. तो कॉस्ट प्राइस अगर ये 5 के रेशियो में लेगा तो सेलिंग प्राइस इसकी 8 बननी होगी. तो व्हाट विल बी द प्रॉफिट. प्रॉफिट इज नथिंग बट 8 minus 5, that is 3. What will be the profit percent. Profit upon cost price into 100 है ना. तो what will be the profit. Profit is 3. cost price is 5 into 100. so 5 से ये काटेंगे 20 times. 3 2 is 60. what will be the profit. Profit will be 60%. ओके. ये तो हो गया ट्रेडिशनल मेथड है ना. अब एक और है. एक बताता हूँ ट्रिक. शॉर्ट ट्रिक. Okay, let me add one page. This is question 2.
At page. Okay. It come in the end. Let me move. Okay. So this will be our ट्रेडिशनल मेथड. अब एक ट्रिक बताता हूँ. So yes, let's continue with our lecture. So hope you are clear up to this. कैसे निकालते हैं हम? सिंपल, यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड. सीपी पर ग्राम हमने ले लिया 100x और टेकिंग इनटू दिस कंसिडरेशन हमने सारी वैल्यूज निकाल दी. लेकिन एक तरीका और है इसको करने का. क्या है वो? देखो. तो सपोज कितना दे रखा था, मार्कअप प्राइस कितनी दे रखी है? 60%. 60% का फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 3/5, है ना. एंड डिस्काउंट दे रखा है 25%. 25% की फ्रैक्शनल वैल्यू कितनी होती है? 1/4. ठीक है. तो अब लेट से कोई चीज़ 60% इंक्रीज करी है, तो लेट से अगर कोई चीज़ 5 रुपीज़ है तो 60% इंक्रीज करने पर वो कितनी हो जाएगी? 8. ठीक है. अब किसी चीज़ को 25% रिड्यूस कर दिया है, तो अगर वो चीज़ अभी एट प्रेजेंट 4 है तो 25% पे दैट इज 4 में से 1 का रिडक्शन कितना होगा? तो 4 से 1 का रिडक्शन कितना हो जाएगा? 3, है ना. और दूसरी चीज़ क्या है? इंस्टेड ऑफ गिविंग 750, इंस्टेड ऑफ गिविंग 1 kg, 1 kg की जगह पे कितना दे रहा है वो? 750 ग्राम्स दे रहा है. यानी कि 250 ग्राम की चोरी कर रहा है ना. अब थ्रू कॉमन सेंस हम एक बात जानते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहा है? प्रॉफिट ज़्यादा करने के लिए, है ना. अब प्रॉफिट उसे ज़्यादा करना है. ठीक है. तो इस साइड को लेट से सीपी फैक्टर्स मान लेते हैं, कॉस्ट प्राइस फैक्टर्स, जिन पे कॉस्ट प्राइस डिपेंड करती है. इस साइड को मान लेते हैं लेट से सेलिंग प्राइस फैक्टर्स. ठीक है. एक ट्रिक का पार्ट है, कोई ट्रेडिशनल मेथड नहीं है, तो ध्यान से समझना. यहाँ मान लिया हमने कॉस्ट प्राइस फैक्टर, यहाँ मान लिया हमने सेलिंग प्राइस फैक्टर. तो प्रॉफिट लेट से इंक्रीज करने के लिए उसने क्या कर ली? बेईमानी कर ली, चोरी कर ली. ठीक है. तो अब क्या करेंगे इसमें? देखेंगे. आ, हाँ. तो अगर ये चोरी करेगा तो ऑब्वियस है 750 ग्राम सीपी साइड पे लिखेगा, यानी कि कम देना पड़े, कम के पैसे लगे, है ना. और जब बेच रहा होगा तो नो डाउट कस्टमर से ज़्यादा लेगा. सबका रेशियो सेम रखना है. अगर ये रुपीस में है, अगर ये रेशियो में है, इनसे कोई टेंशन नहीं है. ये अगर ग्राम में है तो इसको भी ग्राम में करना पड़ेगा, है ना. तो अब क्या करेंगे? अब ये सिंपल, ये सब किस में है? मल्टीप्लिकेशन में. ये सब एक दूसरे से किससे है? मल्टीप्लिकेशन में. और साथ में ये क्या है? रेशियो के फॉर्म में है ना. तो हम इसे जैसे रेशियो को ट्रीट करते हैं, ऐसे ही इसे भी ट्रीट कर सकते हैं. 4 से इसको काट देंगे 2 टाइम्स, है ना. तो 3 से ये काटेंगे 25 टाइम्स. 25 से ये गया 4 टाइम्स, है ना. तो ये आ गया 5, मोटा मोटा रेशियो आ गया 5:8 का. सो प्रॉफिट कितना हो गया? अगर रेशियो के हिसाब से देखें तो प्रॉफिट रहा 3 का. तो प्रॉफिट परसेंटेज कितनी हो जाएगी? 3. प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100, है ना. तो प्रॉफिट कितना है? 3 बाय कॉस्ट प्राइस 5 इंटू 100. 5 से काटेंगे इसको, कितना बचेगा? ये 20 टाइम्स. तो 3 जीरो और 3 टू 60%. और प्रॉफिट अगेन कितना आ गया? 60%. आई थिंक पीछे जो मेथड करा था ट्रेडिशनल, उधर भी आंसर 60% था. सो 60% इज द आंसर. सो बेसिकली आप कुछ भी यूज़ करें, अगर या तो ट्रेडिशनल मेथड या फिर ये ट्रिक मेथड, बट आंसर तो सिमिलर आएगा. क्योंकि अगर आंसर सिमिलर नहीं आया तो फिर ट्रिक का काम ही क्या है. ठीक है. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाँ. 88 लीटर्स ऑफ मिक्सचर. ऑप्शंस दे देता हूँ मैं. जस्ट अ मिनट. थ्री. ऑप्शंस आर 17,
19, 22, 12, ठीक है। तो 88 लीटर्स है मिक्सचर, काय का मिक्सचर है, जूस एंड वाटर। जूस एंड वाटर का किस रेशियो में, जूस एंड वाटर 6 and 5। ओके, इसको मान लेंगे 6 है और इसको मान लेंगे 5 है। तो टोटल कितना हो गया, 11 है, 11 ए। एंड व्हाट इज द एक्चुअल टोटल मिक्सचर, इट इज 88। तो ए की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी कितनी, 8। तो जूस कितना हो गया, 8 6 48, जूस हो गया हमारा 48 लीटर्स एंड 5 8 40, और वाटर हो गया हमारा 40 लीटर्स। देन ओके, इफ x liters of juice is added in the mixture, let's say x liter of juice हमने ऐड कर दिया, then the ratio of the quantity of juice to water becomes 3:2। ये हो गया। यहाँ पे हम थोड़ा और अच्छे से लिख लेते हैं, तो ये हो जाएगा 48 प्लस एक्स अपॉन 40 इज नथिंग बट 3:2। 2 से काटेंगे 20 टाइम्स, ये इधर जाएगा मल्टीप्लाई होके, तो 48 प्लस एक्स इक्वल टू 60। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 माइनस 48 इज नथिंग बट 12। व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x इज 12। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, A and B entered into a business by investing 5x and 8,000। Okay, options दे देता हूँ पहले। Question fourth, options are 1000, 1200, 2100, 2400, 3200। ओके, सो ए और बी एंटर करते हैं पार्टनरशिप में। इन्वेस्टमेंट कितनी है इनकी, पहले की 5x, ए की एंड बी की 8000। ओके, कितने टाइम के लिए, क्या है, 6 मंथ्स। इनिशियली कितने टाइम के लिए, क्या है, 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ्स ए इंक्रीजेस हिज इन्वेस्टमेंट बाय ₹200। तो ए का नेट इन्वेस्टमेंट कितना हो गया 6 मंथ के बाद, 5x प्लस 200, है ना। एंड बी लेफ्ट द बिजनेस, बी लेफ्ट द बिजनेस, दैट मीन्स हिज इन्वेस्टमेंट बिकम 0 एट द एंड ऑफ द ईयर। द रेशियो ऑफ द प्रॉफिट, ओके, तो 6 मंथ्स इन्होंने यहाँ कर दिया, तो 6 मंथ इसका यहाँ हो जाएगा, 6 मंथ इसका यहाँ हो जाएगा। 0 के साथ 6 का मल्टीप्लीकेशन का कोई मतलब नहीं है, तो 6 से 6 6 कैंसलिंग आउट। तो ए बाय बी का इन्वेस्टमेंट और टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का रेशियो कितना हो जाएगा, 5x 10x प्लस 200 कौन 8000। बताओ समझ आया। 0 से 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x प्लस 20 अपॉन 800। और यही जो होगा ये इन द फॉर्म ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट शेयर, दैट इज प्रॉफिट शेयर ऑफ ए एट द एंड ऑफ ईयर अपॉन प्रॉफिट शेयर ऑफ बी एट द एंड ऑफ ईयर। तो x प्लस 20 अपॉन 800 इक्वल टू, ये होगा कितना दे रखा है, 51/40। 4 से काटा 20 टाइम्स, इधर गया, तो यहाँ x प्लस 20 की वैल्यू आ गई 1020। सो x की वैल्यू आ गई 100। ओके, तो निकालना क्या था, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू कितनी हो गई, 1000। 1000 इज द आंसर। क्वेश्चन फिफ्थ, ऑप्शंस फॉर क्वेश्चन फिफ्थ आर, ओके, नंबर 25 इज डिवाइडेड बाय 12। ओके, एक नंबर है 25 जिसको 12 से डिवाइड करा है, द रिमाइंडर इज x एंड क्वेश्चन इज y। ओके, परफेक्ट। सो होता क्या है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, दिस इज द फॉर्मूला। एंड डिवीजन मेथड में इसको कैसे रखेंगे, तो लेट से डिवाइड करके ही दिखाता हूँ। 25 को हम अगर 12 से डिवाइड करते हैं, तो 12 2 ज़ा 24, है ना। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 1। दिस इज नोन एज
remainder. This 2 is known as question, है ना? And this 25 is known as dividend, and this 12 is known as divisor. So हमें निकालना क्या है? ठीक है, रिमाइंडर इज x, सो रिमाइंडर x है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 1। एंड क्वेश्चन क्या है? y है। क्वेश्चन क्या है? y है। तो क्वेश्चन कितना था? 2, तो x प्लस वाई की यहाँ से वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 + 2 = 3, so that is our answer. Okay, option B, 3 is our answer. Now let's move to the next question. Okay, these we had already done. Now let's move straight away to question number 27. Oh, 27 also done. 28. All questions we had already completed. Now let me give you the options for question number 28. Options are okay. So rupees X plus 500 is invested at 10% simple interest. 10% simple interest, okay, for 2 years, and the interest received is 700. Find the value of X. Simple question. Formula based directly. Principal into rate into time upon 100. Okay. What is principal? Value of principal here it is X plus 500. And what is rate percent? Rate percent is given as 10%. Time is 2 years. And what is the value of simple interest? 700. Now putting all these, we get 700 equal to X plus 500 into 10 into 2 upon 100. Cancelling out 2 2 5 times, ये हो जाएगा 3500 equal to X plus 500. What will be the value of X? Value of X is 3500 minus 500 is 3000. This is the value of X. What is the answer? 3000 is our answer. X ही निकालना था, है ना? ठीक है, चलो आगे चलते हैं. Question number 29. Options are 15, 12, 20, 30, 10. Okay. The ratio of boys to girls in the class is 8:7. है ना? I denote boys or males by plus and girls by negative. So it is 8A, it is 7. है ना? If 20 boys join the class, then the ratio of boys to girls becomes 10:7. Find the difference between boys and girls initially. Okay. 20 boys join कर लेते हैं, है ना? तो अब फाइनल रेशियो कितना हो जाता है? 10:7. Let's write it properly. Write A plus 20 upon 7 equal to 10 by 7. This is 7A. 7 से 7 कैंसिल, A जाएगा इधर मल्टीप्लाई में. 8A plus 20 equal to 10A. तो ये हो जाएगा 2A equal to 20. तो A की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर? 10. हमें क्या निकालना था? फाइंड द डिफरेंस बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स इनिशियली. बॉयज इनिशियली आर 8A एंड गर्ल्स इनिशियली आर 7A. इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा? A. A is nothing but 10. So difference कितना हो गया? 10. 10 will be our answer. Right, let's move to our next options. Question 30. Options are
तो टू ट्रेन्स ऑफ लेंथ 180 मीटर्स, लेट नेम दीज ट्रेन्स एज ए एंड बी, है ना। इसकी स्पीड ले लेते हैं और लेंथ ले लेते हैं। टू ट्रेन्स हैं तो लेट से इसकी लेंथ ले लेते हैं 180, इसकी लेंथ ले लेते हैं 120, और कुछ भी कर सकते हैं, है ना। ट्रेवल्स इन द सेम डायरेक्शन, द फास्टर ट्रेन ओवरटेक द स्लोअर ट्रेन इन 15 seconds, ओके। इफ द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 5a, लेट से 5:3 के रेशियो में, तो इसमें 5a मान लेता हूँ, इसको 3a मान लेता हूँ। या फिर लॉन्गर ट्रेन की स्पीड को लेट से 3a मान लेते हैं, या फिर शॉर्टर ट्रेन की स्पीड को लेट से 5a मान लेते हैं, है ना। तो हेयर ट्रेन्स नेम एक्चुअली डजेंट मैटर, और यहाँ पे ये भी मैटर नहीं करता कि इससे शॉर्टर लेंथ ज़्यादा तेज चल रही थी या लॉन्गर ट्रेन ज़्यादा तेज चल रही थी। सो क्वेश्चन इसी तरीके से फ्रेम है। ये मुझे कैसे पता? प्रैक्टिसिंग। आप भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी आ जाएगा, ठीक है। तो आप करते हैं, बाकी सब चीज़ सेम रहेगी। तो टोटल डिस्टेंस कितना रह जाएगा? अब लेट से ये एक ट्रेन है, ये दूसरी ट्रेन है ना, दोनों इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हैं। इसकी स्पीड ज़्यादा है तो तभी ओवरटेक कर पाएगी। तो ये टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेगी? 180 तो अपना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, और साथ में ये लेट से ये 120, या फिर इसको मैं 120 मान लूँ, या इसको मैं 180 मान लूँ। सो कुछ भी कर लो, टोटल डिस्टेंस जो होगा वो हमेशा कितना रहेगा? 180 प्लस 120, विच इज़ नथिंग बट 300, ओके। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 300 मीटर्स, है ना। और रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? जब सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है? रिलेटिव स्पीड हो जाती है स्पीड 1 माइनस स्पीड 2। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करती हैं इस तरीके से, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाती है? स्पीड 1 प्लस स्पीड 2। सो दिस इज द केस ऑफ दिस इन द सेम डायरेक्शन, है ना। तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी? लेट से एस मान लेता हूँ, कैपिटल एस। रिलेटिव स्पीड हो जाएगी स्पीड 1 5a, स्पीड 2 इज 3a, रिलेटिव स्पीड हो गई आपकी 2a, है ना। सब फॉर्मूला लगाते हैं, जो होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड कितनी है? 2 है, डिस्टेंस कितना है? 300, टाइम कितना बोला है? 15 सेकेंड्स। तो ए आ गया हमारा 10। अब निकालना क्या है? फाइंड द स्पीड ऑफ द स्लोअर ट्रेन। स्लोअर ट्रेन की स्पीड कितनी है? 3 है। ए की वैल्यू कितनी आई है? 10। तो 3 इंटू 10 इज नथिंग बट 30। दिस इज द आंसर, ऑप्शन ए, ओके। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 31। ऑप्शंस आर okay. The length of the rectangle. So this is the rectangle. This is the rectangle. This is length, and this is breadth. The length of the rectangle is 25% more than the breadth of the rectangle. Let assume breadth to be 4x. Why I assume 4x? Because here it is 25%. So 25% fraction is nothing but 1 by 4. So it's better to take something in a multiple of 4. That's why I took 4x. है ना। And length of the rectangle is 25% more. Okay, so if it is 25% more, suppose if a thing is 4, then it will become 5. So now let's say if the length is this and this is 4x and it is increasing by 25%, तो प्लस 1 भी आएगा। तो ये कितनी हो जाएगी? 5/4। तो ये हो जाएगी L/4x, है ना। तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ की वैल्यू हो जाएगी 5x। लेंथ इज 5x। सो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है रेक्टेंगल का? लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया कितना दे रखा है? 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेंथ की वैल्यू कितनी है? 5x। ब्रेथ की कितनी है? 4x। 5 4 जा 20, और ये कैंसिल, और ये 25 टाइम्स, यानी कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 25। तो एक्स बराबर +- 5।
एक्स की वैल्यू एक बार 5 आ गई, एक एक्स की वैल्यू एक बार -5 आ गई। ये वाला केस कैंसिल हो जाएगा। क्यों कैंसिल हो जाएगा? क्योंकि लेंथ हमारी कितनी है 5x, ब्रेथ हमारी कितनी है 4x। अगर हम -5 रखेंगे तो दिस कम्स आउट -25, दिस कम्स आउट एट -20। मैंने ऐसा कोई रेक्टेंगल नहीं देखा जिसमें लेंथ नेगेटिव में होती हो, ब्रेथ और नेगेटिव में होती हो। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो हमारी लेंथ कितनी आ जाएगी? लेंथ आ जाएगी 25 सेंटीमीटर, ब्रेथ आ जाएगी कितनी? 20 सेंटीमीटर, है ना। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 25 प्लस 20 विच इज नथिंग बट 45, 2 इंटू 45 इज नथिंग बट 90। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा? 90 सेंटीमीटर इज आवर आंसर। सिंपल क्वेश्चन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑप्शंस, ऑप्शंस आर पाइप ए एंड पाइप बी। टाइम दे रखा है, कितने आवर्स में फिल करते हैं एक उसको, है ना। तो कितना दे रखा है? ए का 10 आवर्स और बी का कितना दे रखा है? 15 आवर्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो इनकी एफिशिएंसी निकाल लेते हैं, है ना। और एफिशिएंसी निकालने से भी पहले अज्यूम कर लेते हैं जो टैंक की कैपेसिटी होगी वो कितनी होगी। इन दोनों का कॉमन मल्टीपल ले लेते हैं विच इज नथिंग बट 30A, है ना। तो ए की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? ए की एफिशिएंसी हो जाएगी, टोटल कैपेसिटी कितनी थी 30A और टोटल टाइम कितना लगा है 10, तो ये हो जाएगी 3A। सिमिलरली बी की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 30A डिवाइडेड बाई 15 विच इज नथिंग बट 2A। तो ये हो जाएगी 2A, है ना। तो इन 1 आवर ए कितना फिल करेगा? ए फिल करेगा 3A इंटू 1, 3A ऑफ द टैंक इन अनदर 1 आवर। बी फिल करेगा, बी कितना फिल करेगा? 2A इंटू 1 आवर, दैट इज 2A। सो बोथ ए प्लस बी इन 2 आवर कितना टैंक फिल करते हैं? 2A प्लस 3A विच इज नथिंग बट 5A, है ना। तो जब 5A टैंक को ये 2 आवर में फिल कर देते हैं तो 38 टैंक को कितने आवर्स में फिल करेंगे? तो ये हो जाएगा 5 6, 6 टाइम्स ऑफ 2 आवर्स, 6 टाइम्स ऑफ 2 आवर्स इज नथिंग बट 12 आवर। अब ये 2 से मल्टीप्लाई क्यों किया? इसके पीछे का एक रीज़न है। इसके पीछे का क्या रीज़न है? ए प्लस बी दोनों मिलके 2 घंटे में टैंक 5A फिल कर रहे हैं। बट ए प्लस बी अगर हम 1 घंटे का निकालें तो 1 घंटे का कितना हो जाएगा? और हम ये अज्यूम करते हैं कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटायर टाइम लाइन में, है ना। अगर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो ए प्लस बी 1 घंटे में कितना करेंगे? 2.5A। तो इसी तरीके से 30A डिवाइडेड बाई 2.5A करेंगे तो कितना आ जाएगा? 12 आवर्स। दिस इज ओनली फॉर पर्पस ऑफ पर्पस टू मेक यू अंडरस्टैंड, रेस्ट यू रिमेंबर दिस। क्योंकि अगर 2 घंटे में अगर कोई चीज़ करती है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा, तभी जाके टोटल टाइम आएगा विच इज नथिंग बट 12 आवर्स। होप यू गेट द कंसेप्ट। सो 12 इज आवर आंसर। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 33। ओके, ऑप्शंस आर ओके। द एवरेज एज ऑफ 30 स्टूडेंट्स, 30 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी दे रखी है? इधर मैं एवरेज लिख देता हूँ, इधर मैं नंबर लिख देता हूँ, है ना। तो 30 स्टूडेंट्स की एवरेज एज कितनी दे रखी है? 16 ईयर्स। आफ्टर 5 स्टूडेंट ज्वाइन, तो +5 स्टूडेंट ज्वाइन करते हैं और -3 स्टूडेंट लीव कर देते हैं, और नेट एवरेज कितनी हो जाती है? 15 ईयर्स। सॉरी,
नेट एवरेज कितना हो जाता है आफ्टर दी अरेंज आफ्टर फाइनल, कितनी हो जाती है 17 ईयर्स। इफ द एवरेज एज ऑफ द स्टूडेंट्स हु लेफ्ट वाज 15 ईयर्स, ओके, इनकी एवरेज एज दे रखी है 15 ईयर्स। इसकी एवरेज एज में लेट से मैं मान लेता हूँ, अज्यूम कर लेता हूँ बी, है ना। तो बताते हैं 30 × 16, ये आ गया टोटल सम इक्वल टू, तो है ना, ये आ गया टोटल सम प्लस 5 न्यू स्टूडेंट्स आए हैं, उनकी एवरेज एज का सम, माइनस जो नेट स्टूडेंट गए हैं उनकी एज का डिफरेंस, डिवाइडेड बाय टोटल न्यू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कितना हो जाएगा 30 + 5 - 3, ये कितना हो जाएगा 17। तो यहाँ से ये कितना आएगा 13 × 6 480 प्लस 5b - 45 इक्वल टू 17 × 32, है ना। इसको सॉल्व करते हैं, 73 × 51 510, 17 × 2 = 34, ये हो जाएगा 544। सो 5b की वैल्यू आ जाएगी 544 - 480 + 45, सो ये हो जाएगा 100, 40 - 80 - 40 प्लस 49, है ना। तो ये हो जाएगा 60 + 49, तो आ जाएगा 5b की वैल्यू आ गई 109, ठीक है। सो एवरेज वैल्यू कितनी आ गई हमारी 109/5, बट हमें क्या निकालना है, एवरेज इज नथिंग बट सम अपॉन नंबर, व्हाट इज सम निकालना है हमें, तो नंबर कितना है 5, तो इसको इससे कैंसिल करेंगे तो सम की वैल्यू कितनी आ जाएगी 109। सो दिस इज आवर आंसर 109, है ना। अब चलते हैं क्वेश्चन 34। ऑप्शंस आर 7 C 9 D 10 E 5, all this is in kilometer per hour. The speed of the boat in still water is, let denote speed of boat by small u, which is 15 km/h, and speed of stream by w, ये हमें निकालनी है, ठीक है। If the time taken by boat, same concept, डाउनस्ट्रीम और अपस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम के केस में क्या होता है, अगर बोट ऐसे जा रही है तो रिवर भी ऐसे ही फ्लो कर रही होगी, और अपस्ट्रीम के केस में क्या होता है, अगर बोट ऐसे जा रही है तो रिवर ऐसे फ्लो कर रही होगी। तो इन दिस केस डाउनस्ट्रीम केस रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी u + w, इन अपस्ट्रीम केस रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी u - w। सो हियर इट इज द केस ऑफ डाउनस्ट्रीम, तो डाउनस्ट्रीम केस में स्पीड कितनी हो जाएगी u + w, u कितनी दे रखी है 15 + w, ओके। और बाकी जो इतने भी फॉर्मूले हैं सब सेम रहेंगे, दैट इज स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो स्पीड कितनी हो गई 15 + w, डिस्टेंस कितना हो गया 440 किलोमीटर्स, टाइम कितना दे रखा है 22 आवर्स, 22 से ये 20 टाइम्स, सो 15 + w इक्वल टू 20, सो w की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 km/h, that is speed of stream is 5 km/h, so this is our answer. Now let's move to the last question for today. Okay, options are the total population in village A. So there are two villages, village A and B. Total population in village A is 27,000, which is 40% less than that of village B. 40% less. What will be the fractional value of 40%? 40% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 2/5, है ना। अब कोई चीज़ लेट से अगर 5 है
और वो 40% कम है, तो वो चीज़ नेचुरली कितनी हो जाएगी, 3। अब इस 3 को हम इक्वेट कर देते हैं 27,000 के बराबर, तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 27,000 डिवाइडेड बाय 3, विच इज़ नथिंग बट 9,000। तो 5 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9,000 इंटू 5 विच इज़ 4,500, सॉरी 45,000। सो विलेज बी की पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी, 45,000। ओके, समझ आया कैसे निकालते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं। लेट्स से अज्यूम विलेज बी की पॉपुलेशन लेट्स से बी, तो ये 40% कम है, तो ये हो जाएगी 3/5 इज नथिंग बट 27,000, है ना। तो 3 से काट देंगे इसे 9,000 टाइम्स, सो बी और बराबर 5 इधर जाएगा मल्टीप्लिकेशन में, तो ये हो जाएगा 45 के 45,000 जो निकाला हमने, ठीक है। अब क्या बोलता है, ओके, विलेज बी की पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी, 45,000, है ना। और मेल टू फीमेल कितने हैं, मेल टू फीमेल की पॉपुलेशन कितनी है, तो अज्यूम कर लेते हैं लेट्स से 5 है, और इसको अज्यूम कर लेते हैं 4 है, रेशियो में दे रखा है, ठीक है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 9 है इक्वल टू 45,000, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5,000। निकालना क्या है, नंबर ऑफ विलेज मेल पॉपुलेशन, तो मेल कितने हो गए विलेज बी में मेल हो गए इज नथिंग बट 5 है, दैट इज 5 इंटू 5,000, सो कितना हो गया आंसर, 25,000। What will be our answer? 25,000 is our answer. So these are all the top 20 35 by 35 question set. Highly important for upcoming RBI Assistant Prelims exam. If you want more such videos, please make sure to join my Telegram group, as well as do let me know in the comments if you had any doubts. And apart from that, to if you want to if you want my help in particular chapters, then do let me know. I will surely help you all. That's all for the day. Thank you.